Now, ways of representation of Cartesian product. कुनै पनि कार्टेशियन प्रोडक्टलाई हामी कति तरिकाबाट हेराउने हैन सपोज गरौँ a and b दुईवटा सेट छ त्यसलाई हामी कति मेथडबाट त्यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हेराउन सक्छौं त कुनै पनि कार्टेशियन प्रोडक्टलाई हेराउनको लागि हामी 5 मेथड युज गर्न सकिन्छ फर्स्ट सेट ordered pair second by tabulation method third by T diagram, fourth by mapping diagram, 5 by graphically. So any Cartesian product can be represented by 5 methods. First is by set ordered pair, second is by tabulation, third is by T diagram, fourth is by mapping diagram, and fifth is by graphically. Let's see some example. Example number 1. If A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 6, 7, find A cross B. The first, how can you find out A cross B? By set ordered pair. By set ordered pair. A cross B. 1, 2, 3 cross 6, 7. The by set ordered pair. The 1, 6. 1, 7, 2, 6, 2, 7, and so on. Second, by tabulation method. By tabulation method. How can you find out A cross B? By tabulation method. Tabulation method बाटा A cross B लाई कसरी हेराउने? हेरा टेबल बनाउने परे यसरी. A cross B मा B यहाँ लिने माथि B यो साइड मा A 1 2 3 B को एलिमेंट्स 6 7 तो 6 7 तो 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 A cross B लाई tabulation method बाट हेराउनु छ भने यसरी हेराउनु क्लियर सेकेन्ड third method by tree diagram ट्री डायग्राम बाट हामी कसरी हेराउने ल यहाँ A लेख्ने यहाँ B लेख्ने A मा छ 1 2 3 B छ पहिला 6 लिने 1 2 3 7 लिने 1 6 2 6 3 6 1 6 2 6 3 6 clear este 1 7 2 7 3 7 यो चाहिँ भइहाल्यो बाइ
ट्री डायग्राम तो ट्री डायग्राम बाटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ला हेराउनु छ भने यो तरिकाबाट हेराउनु थर्ड मेथड छ मैपिंग डायग्राम by mapping diagram. How can we represent Cartesian product by mapping diagram? Mapping diagram बाटा Cartesian product कसं लिहिणार? Yes sir. A दिने B दिने A मा लेखने 1 2 3 B मा 6 7 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 ऐसा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ला हमें मैपिंग डायग्राम बाटा हेराउन सक्छौं अब फिफ्थ मेथड छ बायोग्राफिकली फिफ्थ मा छ बायोग्राफिकली हामी कसरी हेराउनु ल हेरौ ग्राफिकली हेराउनको लागि ग्राफमा दुईटा एक्सिस बनाउने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यो भयो x एक्सिस यो भयो y एक्सिस x एक्सिस मा a लिने a यहाँ छ हाम्रो 1 2 3 b y एक्सिस मा b 1 2 3 4 5 6 7 b मा चाहिँ 6 र 7 छ हाम्रो तो 1 6 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 तो यो भइहाल्यो बायोग्राफिकली मेथड यसरी हामीले कुनै पनि कार्टेशियन प्रोडक्टलाई 5 तरिकाबाट हेराउन सक्छौं फर्स्ट मा छ बाइ सेट अर्डर पेयर सेकेन्ड मा बाइ ट्री डायग्राम थर्ड मैपिंग डायग्राम त्यस्तै बाइ ग्राफिकली र टेबुलेसन मेथड यसरी 5 तरिकाबाट कुनै पनि कार्टेशियन प्रोडक्टको चाहिँ त्यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं ल ओके एक्जाम्पलहरु हेरौं तो दुईटा एक्सरसाइज पढे हामीले एउटा सेट अर्डर पेयर को बारेमा एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट को बारेमा तो केही एक्जाम्पलहरु हेरौं Exercise 1.1 Find the value of x and y. A C number here 2x minus 1 y plus 2 is equal to minus 1 comma 2. So 2x minus 1 y plus 2 is equal to minus 1 comma 2 means this and this order pairs are equal. So when two orders pairs are equal then first component of first order pair is equal to first component of second order pair. Second component of first order pair is equal to second component of second order pair. So by equating the 2x minus 1 is equal to minus 1, y plus 2 is equal to 2. The 2x is equal to minus 1 plus 1, cancel. 2x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0. Similarly, y is equal to 2 minus 2, y is equal to 0. So therefore, x 0, y 0.
सर यहाँ मिलाए दुईटा इक्वल ऑर्डर पेयर दिए कुछ हमने अननोन पॉइंट चाहिए वेरिएबल को वैल्यू हमें फाइंड आउट करना अब और कोई है जैसे if A is equal to 1 2 3 B is equal to A B C and A cross B and B cross A also find N A cross B and N B cross A ये हम लोग दिए को सब 1 2 3 और बी दिए से एबीसी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना सा इसको एन निकाल एन ए क्रॉस बी अल्टर नंबर कति हुन्छ ऑर्डर पेयर को द बी क्रॉस ए मा कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ नाउ सॉल्यूशन 1 2 3 b is equal to abc a cross b 1 2 3 cross A B C. That means 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Similarly, 3A, 3B, 3C. This is A cross B. B cross A. The first B लिखने, yes पछि A लिखने. And now making order pair from A B to A. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. A क्रॉस B अति भयो B क्रॉस A अति भयो अब n A क्रॉस B तो n A क्रॉस B A क्रॉस B मा कति वटा ऑर्डर पेयर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means n A cross B is equal to 9 similarly n B cross A in B cross A how many order pairs so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही we have your now our homework करो number 1 if x plus y is equal to 8 0 find value of x and y. Number 2 if a is equal to 1 2 and b is equal to integer is a cross b possible is B cross A possible give reasons. Number 3 if A cross B 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 find set A and B. Number 4
A is equal to AB, B is equal to CD, C is equal to DE, and A cross B intersection C. A cross B union A cross C. A minus B cross B minus C. Number 5. A is equal to X, such that X belongs to natural number less equal to 3. B is equal to X. X belongs to Z. Minus 1. X 1. And C is equal to 1, 2. Verify. B following. Number 1. A cross B union C. A cross B union A cross C. Number 2. A minus B cross C. A cross C minus B cross C. तो आगे को लगे